benefits in them as well. And I can see Avi. So Avinash Prabhuji from Damodar Desh from Dubai is here. Hare Krishna Prabhuji. Hare Pronounce Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So good to have you. As always, it's always a pleasure to have you around. So great. Last week you were not here, and Hare Krishna. सभी का स्वागत है, स्पेशली अविनाश प्रभु जी को पसंद है कि हम हिंदी में बोले। तो प्रभु जी, आप लास्ट वीक नहीं आ पाए थे। हमने रूप गोस्वामी जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हम मंगलाचरण करते हैं और इसके बाद रूप गोस्वामी जी के बारे में और डिस्कस करेंगे। जो हमने प्रभुजी, आज लास्ट शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछ लूं एंड की जगह। हम मंगलाचरण कर लेते हैं, प्रभु की कृपा हो जाएगी। जी, ओके, ठीक है, हरे कृपा की बात कृष्ण। करते जी जी, थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। फील फ्री टू जॉइन मी इन मंगलाचरण इफ यू लाइक। अज्ञानातिमिरन्धस्य निरन्तस्य ज्ञानार्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूपः रूपः कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगणा सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् रघुनाथान्वितं साद्वैतं सवादूतं सगणभूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् चैतन्यदेवं श्रीराधा राधा कृष्णपादान् कृष्णपदान् सहगणा सहगणा ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिन्धु सिन्धो दीनबन्धु दीनबन्धु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन तप्तकाञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य सिन्धुभ्य एव च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। नमो विष्णुपादाय पादाय कृष्णप्रेष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सरस्वती देवी देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरभक्तवृन्द। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। मंगलाचरण से पहले मैंने कहा प्रभु की कृपा हो जाएगी। प्रभु की कृपा हमेशा ही रहती है। मंगलाचरण करते हैं तो हमको ये याद रहता है कि प्रभु की कृपा है हमारे साथ में अभी। एंड अविनाश प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे, कुछ कहना चाहते थे। अगर अभी समय अच्छा है, आप पूछ सकते हैं। हैं। प्रभुजी, मेरे ऑफिस में ना, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं नहीं हूँ। मेरे ऑफिस में एक मेरा कोलीग है जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब कि तो, जी घर जी से थोड़ी झिक झिक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो ऑफिस में भी थोड़ा काम थोड़ा अफेक्ट कर रहा है। जी। उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैं तो किसी हेल्प करने के लायक नहीं हूँ। मैंने कहा था कि मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा, अह, हेल्प कर दे तो छोटी जी। छोटी बातों पे, कोई बड़ी लड़ाई नहीं, छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती है। हम्म। सच बताऊं तो हमेशा स्पीकर ऑन पे ही है। मैं कर रहा था तो मैंने कहा तू क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर मेरा क्वेश्चन पूछ सकता था पूछ दे, क्या हरे होगा कृष्ण। अगर आप बता सकते हो तो बता दो। तो वो सामने ही है, मैं नाम लूंगा नहीं।
जी जी नाम को जी। मैं सीक्रेट रखना चाहता हूँ, तो आप हाँ देख लो जो जी। कर सकते हाँ बिल्कुल। हरे कृष्णा। सो सबसे पहले तो प्रभु जी को हरे कृष्णा। प्रभु जी आप सुन रहे हैं, और हम हरे कृष्णा मूवमेंट से जुड़े हैं, तो हम आपको प्रभु कह रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया, और हम सभी के लिए बताया, कि हम सबके अंदर भगवान का वास होता है। सो आपके अंदर भी है, और आई गेस अगर मैं सही समझ सका तो आपकी जो धर्म पत्नी है घर पे, उनके अंदर भी प्रभु का वास है। तो अक्सर प्रॉब्लम ऐसी होती है और मैं खुद गृहस्थ हूँ, अविनाश प्रभु जी अच्छे से जानते हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि हमने गृहस्थ में फेस नहीं करी, या हम नहीं कर रहे। क्योंकि एक कहावत आती है कि अगर घर के अंदर दो भांडे होंगे, पंजाबी में जैसे कहते हैं, दो वैसल होंगे, तो वो बजेंगे, आवाज आएगी। हैं। तो अगर फैमिली में तीन चार लोग हैं, तो उस सभी के अंदर थोड़े थोड़े से मतभेद होंगे, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो इसमें कुछ आप ये मान के चलें, शायद चेंज नहीं होगा। तो चेंज लाने की कोशिश अगर आपको करनी है, और अक्सर प्रॉब्लम यही होती है कि हम चाहते हैं सामने वाला बदल जाए। तो अगर सामने वाला बदल जाएगा, तो सामने वाले कितने बदल जाएंगे? आप घर पे चलें, एक वाइफ है, फिर अगर घर में एक दो बच्चे हैं, या ऑफिस में देखें इतने सारे लोग हैं, कल को आपने जॉब चेंज करी, तो कहाँ कहाँ आप जाएंगे? मैंने पिछले 10 साल में, 20 साल में शायद 10 कंपनीज चेंज करी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में प्रभु की कृपा से काम करने का मौका मिला। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे कल्चर अलग होता है। दुबई में थे, मस्कट में थे, आबू धाबी में थे, अभी सऊदी में काम करके आए, अभी वापस लंदन में है, लंदन में अभी शायद नई कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं। जहाँ जाएंगे नया कल्चर, नए लोग होते हैं, तो लोग आपके हिसाब से बदल जाएं, अगर आप ऐसे सोचेंगे और इस चीज़ की कोशिश करेंगे, तो असफल ही रहेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि आप सबको तो बदल नहीं सकते, क्योंकि लोग ही इतने हैं। अगर आप अपने आप को हल्का सा बदल लें, तो आप देखेंगे लोग वही रहेंगे, सर्कमस्टेंसेस वही रहेंगे, वो आपसे इंटरेक्शन भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन आपका स्वभाव क्योंकि अब बदल गया है, तो आप देखेंगे कि सामने वाला, जैसे हम कहते हैं अक्सर, पार्टनर्स के लिए मैं कहूँगा रादर देन वाइफ्स के लिए कहें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाइफ्स को भी ऐसे ही लगता है कि भाई मेरे हस्बैंड क्यों नहीं समझते, हस्बैंड को लगता है वाइफ क्यों नहीं समझती। तो शायद हम ये सोचें कि हम खुद ही क्यों नहीं समझते। हम ये चाहें कि सामने वाला समझे, हम ये सोचते हैं हम ही क्यों नहीं समझे। क्योंकि आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को कोशिश कर सकते हो। और जब आप कोशिश करोगे और विफल रहोगे, अनसक्सेसफुल रहोगे, अपने आप को नहीं बदल पाओगे, तो क्योंकि एकदम तो अपने आप को कोई बदल नहीं सकता। तो जब अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे और विफल रहोगे, अनसक्सेसफुल रहोगे, फिर आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जब मेरा ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो सामने वाले को मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि उसके ऊपर कंट्रोल हो। बच्चे, हम बच्चों से बड़े होते हैं, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वाइफ से भी मोस्टली वैदिक कल्चर के अंदर हम देखें तो एक दो साल अक्सर हस्बैंड बड़े होते हैं। तो अगर हम सोचें हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे, तो ये तो थोड़ी सी नादानी हुई, और या बेवकूफ़ी हुई कि हम उम्मीद करें सामने वाला बदले। तो प्रभु जी मैं ये कहूँगा, और अविनाश प्रभु जी साथ में हैं, जब भी आपको मौका मिले भगवत गीता का अगर एक वर्ष भी आप रोज करेंगे, आप देखेंगे परिवर्तन अपने आप अंदर आने लगेगा। अगेन, ये मेरे लिए कहना आसान है, किसी के लिए भी करना मुश्किल है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, अविनाश प्रभु जी अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, और अभी हम बाकी भक्त जो ग्रुप में हैं, उनसे भी पूछेंगे। सभी अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को कह सकते हैं और एक्सेप्ट करेंगे कि जब हम एसोसिएशन में होते हैं भक्तों के साथ में, तो हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। सर्कमस्टेंसेस वही रहते हैं, लेकिन हमें ये पता लगता है कि हमारे अंदर फर्क आ रहा है धीरे धीरे। जेलसी, एनवीनेस, एंगर, गुस्सा आ जाना एकदम, अक्सर यही रहता है। वाइफ ने ये कह दिया, गुस्सा आ गया। आई एम श्योर इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि आपको, कि मुझे नहीं पता लग रहा कि आपकी वाइफ ने ये कर दिया, वो कर दिया।
एंड मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि शायद मैं नहीं समझ सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और हस्बैंड और वाइफ्स के बीच का जो थोड़ा बहुत मतभेद रहता है वो शायद हमेशा ही बना रहेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो मतभेद अगर खत्म हो सकता है तो सिर्फ एक रीजन से खत्म हो सकता है, जब हम अपनी लाइफ के अंदर गोल चेंज कर लें। क्योंकि रहता ये है कि मैं पर्सनली अपने बारे में सोच रहा हूँ कि वाइफ मेरी क्यों नहीं सुनती, वाइफ सोचती है हस्बैंड मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता। लेकिन अगर दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये सोचें कि हम दोनों ही भगवान के बारे में सोचें तो गोल एक हो जाता है। यहाँ पे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अविनाश प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, कुछ आप प्रैक्टिकल आंसर नहीं बता सकते इसका? थ्योरेटिकल आंसर की जगह, जैसे मैं जानता हूँ कि दोनों के दोनों लोग बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, दोनों के दोनों लोग गुरुद्वारे जी जाते हैं, पूजा करते हैं, जी। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, मतलब कि हाँ लगा लो पूरे दिन में अच्छी खासी पूजा करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि जी 15 मिनट करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा करते हैं, जी। अच्छा खासा टाइम गुरु ग्रंथ साहिब पे स्पेंड करते हैं। हम्म, बट उसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिकल आंसर बताओ, ये कि ये छोटी छोटी चीजें जो बाहर की लाइफ को अफेक्ट करे, बच्चों की एजुकेशन को अफेक्ट ना करे, चीजों को अफेक्ट ना करे, उसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कुछ है आप आज क्लास पे देना चाहो, या परसों हाँ तरीका? हाँ जैसे आपने मेरे को बताया था कि आप अपनी गलतियों को लिखना शुरू कर दे, और मेरी गालियां छूट गई थी मेरी बेटी का, वैसे एक दो चीज आपने और बताई थी ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम वाली। हाँ जी। वैसे इसका अगर कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है तो आप प्लीज मेरे को बता दीजिएगा जब भी हो। बिल्कुल। जी जी जी। बिल्कुल। मैं और भी कुछ कहूंगा लेकिन उससे पहले, ओके, माता जी म्यूट हो गई। अनिल प्रभु जी, आप अनम्यूट हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? हाँ प्रभु जी, आपने सोल्यूशन बहुत अच्छा दिया प्रभु जी। अ, लेकिन एक और थोड़ा बहुत एडिशन करना चाहूंगा, ये कि यूजुअली जब घर में ऐसे होता है, तो आई हैव बीन थ्रू बोथ द सिचुएशंस। पहले सिचुएशन ये कि जहाँ पे चीज़ें वर्स हो जाती हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और फिर बोला चाली में वर्स हो जाती है चीज़ें, और मामला और बिगड़ता जाता है संभलने की जगह पे। अब उसको उसको हैंडल करने के लिए एक चीज़ तो ये है कि क्योंकि वर्ड्स आर, यू हैव टू माइंड योर वर्ड्स, जैसे जब जब भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, तो एक चीज़ मैंने देखी है जो बहुत हेल्प करती है, वो है अगर आप किसी तरह से अपने मन में ये बिठा लें कि मुझे 15 10 या 20 के काउंट तक कुछ नहीं कहना है, आई एम गोइंग टू स्टे साइलेंट। तो वो जो रेज का जो इमोशन है ना, वो टच करके आपको चला जाएगा, और आइसिंग ऑन द केक ये होगा कि अगर ये अटेम्प्ट करें कि वो जो 15-20 सेकंड हम लोग जो भी मन में वो एक काउंट ले लें कि ये इतने काउंट तक मुझे कुछ नहीं बोलना। अगर उस काउंट में हम लोग हरे कृष्ण का मंत्र भी करें, हरे कृष्ण महामंत्र का करें, तो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि वो अगर 20 मिनट भी हम लोग ने वो चुप्पी साध ली ना, तो उससे इम्पैक्ट जो जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। और उसमें अगर हम लोग ने हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप शुरू कर दिया वो 20-25 सेकंड्स के लिए, तो मुझे लग रहा है उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। सवाल अरे, फिर वेरी नाइस प्रभु। थैंक यू सो मच। सो अविनाश प्रभु जी, आप प्रैक्टिकल मांग रहे थे। हमारे अनिल प्रभु जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल दिया है कि, और आई थिंक बहुत ही अच्छा है कि सबसे पहले जो हम गुस्सा आता है ऑब्वियसली बॉडीली हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम जब एग्जिबिट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं तो वर्ड्स के थ्रू करते हैं। तो अगर आप वो वर्ड्स को 15-20 सेकेंड्स रोक सकें, और प्रभु जी ने हरे कृष्णा महामंत्र कहा, लेकिन जो आपने बताया कि जो प्रभु जी हैं, माता जी हैं, वो गुरुद्वारे जाती हैं, तो जो भी वो जाप करना चाहें 15-20 मिनट्स, सिर्फ अपने आप को मटीरियली उठाकर थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो पाएंगे 15-20 मिनट्स, तो लगेगा जिस चीज के लिए वो टाइम वेस्ट करना चाह रहे थे, एनर्जी वेस्ट करना चाह रहे थे, वो वर्थलेस है, वो यूजलेस है। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अभी हम माता जी से सुन सकते हैं। माता जी, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग एज वेल प्लीज? हरे Yes, कृष्ण। yes, yes. Thing is, we have gone through this in the family, and as you pointed out, that it's best that you change yourself, which I have done practically in my life. So, by changing yourself, other person will not change, but you will change your attitude towards the situation. So that is more than one thing. Second thing is that when there's argument, when we speak the words, we regret them later. That why did I speak that? And it's anger that is the cause of the things. And you speak so much irrelevant that you बुद्धि का नाश हो जाता है. So control it by, as we say, मुंह में मूंग भर के रखने का है.
Something that we used to say when we were very young. Mukh bhar ke Yeah. rakho, don't speak. And that is, at least for that time being. Third thing that I wanted to say is that we feel hurt because our false ego is hurt, our ahankar is hurt. And Mhm. as we say, Krishna called, give your false ego to Krishna, leave it at the lotus feet of Krishna. Don't think that I'm anything. We are nothing in this material world. It's all because of Krishna's grace that we are here. It's false ego, ahankar, me and mine. That is the one thing that aggravates any situation. So if we can minimize the false ego by saying that give everything to Krishna and do what is best for Krishna, because that's what Krishna is. He wants the best things. He doesn't want our anger. He doesn't want our false ego. So this is practically that what I do in my life. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Thank you so much. And आप कुछ और कहना चाहोगे प्रभु जी खत्म करने से पहले, आपका कुछ प्रैक्टिकल? बिल्कुल प्रभु जी, एक तो आई गेस आपको पता लगा कि माता जी ने भी जो चीज कही, और बहुत ही सुंदर तरीके से माता जी ने कहा, और प्रभु जी ने भी वही चीज कही थी कि आपको मुंह भर के रखना है अपना। आप 15-20 सेकेंड्स तक अगर कुछ ना कहें, लेकिन माता जी ने जो बताई, ऑब्वियसली आपने कहा कि ये थियरी है, इसको हम प्रैक्टिकली कैसे ले सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने जब हमें नाम दिए हैं, तो वो नाम के आगे शिला प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा है कि दास लगाते हैं। तो जब दो डिवोटीज पूछ रहे थे मेरा नाम अच्छा है, मेरा नाम अच्छा है, तो प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा आप ये याद रखो कि आपके नाम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो दास है। तो जब डिवोटीज एक दूसरे को मैसेजेस भी करते हैं, जैसे आज ही प्रभु जी ने एक मेरे को कुछ कहा कि प्रभु जी क्या ये आप मेरे लिए कर सकते हो, तो प्रभु जी ने रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब मैंने रिप्लाई किया तो मैंने कहा प्रभु जी थैंक यू फॉर द सर्विस। तो ये सर्विस एटीट्यूड जो है ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। जो माता जी ने बहुत अच्छे से कहा थर्ड पॉइंट के अंदर कि हमारी ईगो जो है वो बीच में रहती है। अगर हम अपनी ईगो को हटा सकें, हम अगर ये सोच पाए कि मैं गुस्सा हो क्यों रहा हूँ, आई गेस जो सबसे ज्यादा बुरा वही लगता है कॉन्फ्लिक्ट। और अगर मुझे सही से नहीं पता लग रहा तो आप प्लीज मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो यही होती है कि सामने वाला मुझको समझ क्यों नहीं रहा, और जो रिएक्ट कर रहा है मेरे हिसाब से क्यों नहीं कर रहा। कभी कभी उसके अंदर फिर ईगो यही आती है कि मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रही, मुझसे तेज क्यों बात करी, मुझसे ऐसे क्यों बात करी, मेरी बात कोई क्यों नहीं मान रहा। लेकिन आप सोच के ये देखें कि लिटरली यस्टरडे की बात है कि मैंने अपनी वाइफ को कहा कि प्रभुपाद जी ने हम सबको दास बनाया, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो लिटरली उस चीज को लेके चलते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सर्वेंट ही हैं, दास हैं, कि ये कर दो वो कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस फिलॉसफी से चलें कि हम दास हैं, कि हम सर्वेंट हैं, हम अपनी वाइफ के सर्वेंट, हम अपने हस्बैंड के सर्वेंट, हम अपने बच्चों के सर्वेंट, तो ऑफिस का अगर हम छोड़ भी दें, पर्सनली अगर हम ये मान के चलें, शायद हमें कभी ये गुस्सा आएगा ही नहीं कि वो हमसे गलत तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि हम तो हैं ही सर्वेंट। हमारी ये एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाएगी कि हमसे कोई अच्छे से बात करे। हमारी कोई एक्सपेक्टेशन रहेगी नहीं, तो हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि सामने वाला क्या कर रहा है। एंड फिर धीरे 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 ऐसा होता है कि सामने वाले में फर्क आता है। मैं और कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आप प्लीज और कुछ कहना चाहेंगे या कोई एग्जांपल देना चाहेंगे, कुछ क्लैरिफाई करना प्रभु चाहेंगे। ये क्लास शुरू करते हैं। मेरे साथ वो बंदे अभी स्पीकर पे है, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद, ही इज ओके। नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही डिडंट गॉट हिज आंसर। अच्छा आपने जब बोला कि 15 सेकंड के लिए चले जाए, वो कहता है मैं आधे आधे घंटे, एक एक घंटे के लिए घर छोड़ के चले जाता हूँ, वॉक करके आता हूँ, कहीं घूम करके आया, जब आता हूँ तो घर का एनवायरनमेंट वैसा का वैसा ही होता है। आई नो। वन ऑफ द रीजन इन लॉज के फोन करना भी है, और पीछे से श्योर। करके। अब आप अकेले में करेंगे नहीं तो आज की क्लास इन घर के झगड़ों में कभी खत्म नहीं होगी। मैं अकेले 1 to 1 आपकी बात करा दूंगा, या फिर हाँ जी, करके आप प्लीज। सॉल्यूशन को ढूंढना का। आपने 15 सेकंड बोला, वो बंदा 1 घंटे के लिए बाहर जाके वापस आया, एंड स्टिल द सेम थिंग। हाँ जी जी जी, ऑफ कोर्स। जो प्रभु जी ने कहा 15 सेकंड का, चले हम इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन मैं अगर प्रभु जी सुन रहे हैं तो मैं एक ये रीअश्योरेंस जरूर देना चाहूंगा प्रभु जी को, अगेन अपने एक्सपीरियंस से।
एंड जो डिवोटीज भक्त लोग ने पर्सनली शेयर किया है एक्सपीरियंस कि ये आपकी यूनिक प्रॉब्लम नहीं है। जैसे माता जी ने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा, हम भी, ये हम सबके साथ में होता है। ठीक, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये आपकी यूनिक प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स जब हमें दर्द होता है तो हमें ये लगता है कि ये हमारा दर्द सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन अगर आप प्रभु जी आप गलत कह रहे हो, ये मेरे साथ नहीं होता है, ये मेरे को पता, आपके साथ भी नहीं होता। नहीं कई कई लोगों नहीं। की प्रॉब्लम है, यूनिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कई लोगों की है। हाँ अगर आप कुछ काउंसलिंग वाउंसलिंग करके, अगर आप कुछ भाभी जी को या कुछ हाँ। करके आप करवा सको तो प्लीज करवा देना, अगर मेरी हेल्प कर सको तो। जी ये मैं जी जी आपसे जी इतने बिल्कुल। सालों के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज के लिए। मैं ये अगेन मैं कहना चाहूंगा, ये आपने सर्विस का मौका दिया है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने का पर्पस ही पूरा ये है, जो मूवमेंट उन्होंने बनाई कि प्रचार करें। लेकिन प्रचार का फायदा क्या है कि जब भगवान के बारे में कोई सुनेगा तो उसकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो अगर सालों भर लगा के कोई किसी ने 10 डिवोटी बनाए, लेकिन किसी ने एक फैमिली को अच्छे से खुशहाल कर दिया, तो आई थिंक वो जो किसी को खुशहाल कर दिया वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर वो भक्ति में लगेगा तो पूर्ण सरेंडर के साथ लगेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, ये काफियों के साथ में होती है, नॉट नेसेसरी कि सबके साथ में। और सबके फॉर्म एंड शेप, जैसे रेसिज्म के बारे में हम कहते हैं कि फॉर्म एंड शेप डिफरेंट होती हैं, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से। लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है। सिर्फ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशंस। क्योंकि आप ये चीज पहला ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कर सकते हैं, अदरवाइज तीसरा कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप ये कहें कि नहीं मैं और ट्राई नहीं कर सकता हूँ, गारंटी दी जा सकती है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, अगर आप अकेले भी इसके ऊपर लगे रहें काम करते हुए तब भी। और ऑब्वियसली अगर जो आपके पार्टनर हैं वो भी प्रॉब्लम का पार्ट ना बन के सॉल्यूशन का पार्ट बनना चाहें, लेकिन इस स्टेज पे हम मानते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि आप अकेले हैं जो कि सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, और हम उस फिलॉसफी से काम करेंगे। लेकिन सर्टेनली आप प्लीज प्रभु जी से बात कराइएगा, और हम जो भी सेवा कर पाए ये रहेगा हमारा सौभाग्य। बट सर्टेनली प्रभुपाद जी ने बहुत सारे डिवोटीज की लाइफ इस तरीके से चेंज करी है। एक उर्मिला माता जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल, ऐसे ही मैरिज के एग्जाम्पल शेयर करे हैं उन्होंने, जो प्रभुपाद जी की डायरेक्ट, प्रभुपाद जी बहुत कुछ सीखा है और माता जी शेयर करती हैं, तो वही कुछ हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली गारंटीड परिवर्तन आएगा अगर आप साथ में मिलकर काम करते रहेंगे। ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि ओवरनाइट ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई होगी, ये धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम चली जाएगी। और यकीन माने कि आउटलुक ऐसा चेंज हो जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर आपको हंसी आएगी। ये थोड़ा आउटरीच अप्रोच लग सकती है, लेकिन लाफिंग बुद्धा हम जिनको कहते हैं, वो बोधिसत्व थे, तो वो हंसते इसलिए ही रहते थे क्योंकि वो जब लोगों को देखते थे, लोग जिस चीजों के ऊपर परेशान होते हैं अब उनको हंसी आती है, लोगों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, कि एक टाइम के ऊपर मैं भी ऐसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर हंसता था। बट ऑफ कोर्स अभी आप पेन में है तो आपको ये बुरा लगेगा कि कोई आपके ऊपर हंसे, लेकिन कोई आपके ऊपर नहीं हंसेगा। लेकिन यही चीजों को देख के शायद फ्यूचर में आप अपने ऊपर हंस पाए, ऐसा कुछ भक्तों ने बताया है कि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो चलें प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आप आए। एंड अगेन अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर क्लास में आए, और कोई भी प्रश्न जैसे आपने देखा हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। और हम अकेले नहीं हैं, जैसे बाकी भक्तों ने भी शेयर किया, ऐसे सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और ये तो प्रभु जी का बड़प्पन है जो उन्होंने कहा कि गुरु, हम यहाँ पे या तो माने सभी एक दूसरे के शिक्षा गुरु हैं, हम सभी एक दूसरे से जो भी सीख पाए और अपने जीवन में और किसी और के जीवन में परिवर्तन अगर आ पाए तो वो हमारा सौभाग्य है। चलिए, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, अब हम क्लास शुरू करते हैं। बस मैं अच्छा, थोड़ा म्यूट हो जाऊंगा, मैं ऑफिस की चेयर पे जाके बैठ रहा हूँ उनके ओके, साथ। ठीक है, अब मैं रिप्लाई नहीं हरे, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। So today's session and the last session we did it on Rupa Goswami ji. Rupa Goswami ji
Of course, the mantra itself, Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. When will Shri Rupa Goswami Ji, who has established on this planet the mission of Lord Chaitanya's desire, give me shelter at his lotus feet? So this is about Rupa Goswami Ji. Why we are discussing Rupa Goswami Ji? Because we have completed Shri Ishopnishad. We are about to start Nectar of Instruction, and Nectar of Instruction has been written by Shri Rupa Goswami Ji. So before we go and read the scripture, we are learning about the author so we can respect and we can understand the mood and mission of the author. A lot of things being said about Rupa Goswami Ji. He was a master of devotional literature, apostle of pure devotion, which is like the top peak, architect of Gaudiya Vaishnava, and we will see why. Of course, we have seen few things, but we will quickly recap. And then comprehensive study of, if anyone would like to do on Gaudiya Vaishnava, then just him and his biography is good enough to understand what Gaudiya Vaishnava is. From 1489 to 1564, Rupa Goswami Ji. Rupa Goswami Ji was the chief, the leader of the prominent six Goswamiji, Shar Goswamiji of Vrindavan. And these are the names: Rupa Goswamiji, Sanatan Goswamiji, who was the elder brother, Raghunatha Bhatta Goswamiji, Raghunatha Dasa Goswamiji, Gopala Bhatta Goswamiji, and then Jiva Goswamiji. And today, I might have mentioned Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita is the biography of Chaitanya Mahaprabhu Ji. That's been compiled, written by Krishna Kaviraj Goswami Ji. And today is his disappearance day. Disappearance day is when somebody has left the body. So today is also the disappearance day of Raghunath Bhatta Goswami Ji and Raghunath Dasa Goswami Ji. So Raghunath Bhatta and Raghunath Dasa Goswami Ji's their disappearance day, and Kaviraj, Krishna Kaviraj Goswami Ji's disappearance day. All three disappearance days today itself. So any session in Hare Krishna movement, if we go, like I was saying, today's Bhakti Vedanta manner session, that's also Prabhuji, Neel Madhav Prabhuji discussed very briefly, but at the end of the session. So I just thought I will mention, we pay obeisances to all three acharyas of the Sampradaya. They contributed greatly. And this is a slide which, if you requested, well, if you remember, I mentioned I might do it. And Krishna's mercy, I remembered that it's great to see that how all these six Goswamijis contributed. Of course, we are focusing on Rupa Goswamiji, but other Goswamijis, because they are considered Shar Goswamijis, the top six Goswamijis who established or re-established Vrindavan. And the main prominent thing is that Rupa Goswami Ji, so the temple which were established. So Rupa Goswami Ji helped to establish Radha Govinda Ji temple. So Radha Govinda Ji temple, if you will notice, was this is in Vrindavan, Radha Govinda temple Ji, because the deity is Radha Govinda, hence the name. Similarly, Sanatan Goswami Ji, Madan Mohan, the temple. I hope these temples are known to you. If known, not known, that these temples are very known in Vrindavan. Radha Govinda Ji temple, Madan Mohan Ji. Radha Damodar temple was established by Jiva Goswami Ji. This temple is very famous because Shri
Srila Goswami, Srila Prabhupada ji was there. Prabhupada ji was living retired life, and his room is still there in Radha Damodar temple. So these three temples, Radha Raman temple is very famous, Radha Gokulananda temple, and the deities, Shaligram Shila. This is, it says it's Swambhu. The Shila was self-manifested to Raghunath Bhatta Goswamiji, who established that. So this slide itself just explains the main temples of current Vrindavan being established by these six Goswamijis. Hence, the Vrindavan came back again in the limelight. तो हम देख सकते हैं कि अगर आप तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो जो मुख्य टेम्पल हैं वृंदावन के, वो ये गोस्वामी जी हैं परंपरा के अंदर। इसलिए गौड़ीय वैष्णव परंपरा वृंदावन के अंदर बहुत महत्व रखती है। इसके अंदर अगर आप देखें तो इस्कॉन का टेम्पल नहीं है, कृष्ण बलराम टेम्पल, क्योंकि वो शिला प्रभुपाद जी ने बाद में किया है। इसके अंदर कृपालु जी महाराज का जो टेम्पल है वो नहीं है, क्योंकि वो भी भोगी एक आचार्य हैं, उन्होंने बाद में भी स्टेब्लिश किया है। ऐसे बिहारी जी का टेम्पल इसके अंदर नहीं है, वो एक अलग परंपरा से निकल के आया है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुख्य टेम्पल वृंदावन में ये है। Srila Goswami ji, we have seen his first name, Sanatan Malik, later got initiated name as Rupa Goswami ji. So he was around in 16th century, 15th, 16th century, if you say. And then principal disciple of Chaitanya Mahaprabhu ji. Chaitanya Mahaprabhu ji said that Rupa Goswami ji is the one who could understand me without me explaining it. Like last time we discussed that there could be different types of students. And the topmost is who understand the heart of teacher, the mind of the teacher. And Rupa Goswami ji was that to Chaitanya Mahaprabhu ji himself. So that was the caliber. And he was probably the first one after Chaitanya Mahaprabhu ji who started working on Gaudiya Vaishnavas. And a lot of, so of course, the reason we are discussing him, because we are going to read the scriptures, nectar of instruction, nectar of devotion. So he did a lot and a lot of great service for Bhakti movement. And there's a lot we can discuss about him. How much time we will have, we will see. He started his work in the, he was so both Prime Minister and Chief Minister, both the brothers were there, but they renounced that political life. They were very wealthy people, but they renounced everything to be there in the service of Chaitanya Mahaprabhu. He was born in the current Jasora, currently in Bangladesh. Family was a Brahmin family from Karnataka. And later he was in Bengal Sultan, and Chaitanya Mahaprabhu ji had interactions with the Maulvi as well. So there are some great like Hari Nam Sankirtan started when he interacted with the Maulvi. And then his Rupa Goswamiji's brothers, Sanatan Goswamiji and Vallabha Anupam, these we have seen. But when Rupa Goswamiji's life was changed, when actually he became Rupa Goswamiji, after he met Chaitanya Mahaprabhuji in 1515. And then this is there very much detail in Chaitanya Charitamrita, what instructions Chaitanya Mahaprabhuji gave it to him. So that incident was life-changing incident in Rupa Goswamiji's life, and what Gaudiya Vaishnavas would believe that this, if that movement wouldn't happen, then we wouldn't have what we have received. So this is what Srila Prabhupada mentioned in one of his books, that life-changing movement was not just for him, that was for all the followers of Gaudiya Vaishnava. That movement and those instructions, because they are still there. So like Krishna gave instructions to Arjun, Chaitanya Mahaprabhuji gave instructions to Rupa Goswamiji, and those instructions are for all of us. Bhagavad Gita instructions and Chaitanya Charitamrita instructions. 1515 CE, immediate spiritual transformation,
And we discussed from other sampradayas as well, how this is possible. Rupa, beautiful form, name was given, and we will see in detail the 4 instructions which were given. So this is Rupa Goswami ji taking, and if we still go there, that place is there as a temple, which we can see. So these are the 4 instructions being given, and it was Rupa Goswami ji who could take off to this. Rupa Goswami ji का सामर्थ्य था जो कि इन 4 instructions पे वो खरे उतरे. अदरवाइज शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन जो मेरे गुरु ने दी है कि भगवान का नाम बढ़ाओ, मैं बस उसके अंदर लगा हूँ. लेकिन रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु जी ने ये 4 इंस्ट्रक्शन दी क्योंकि उनको था कि वो ये कर सकते हैं. रूप गोस्वामी जी ऐसे भक्त थे. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, rediscover and preserve the lost holy places of Krishna pastime. तो हमें पता लगता है कि वृंदावन पहले से बसा था, पर उसको दोबारा से बसाया जाए, इसका उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी. Establish deities in their worship, because after the Arabs invaded India, a lot of places, especially in North India, the deity worship went down. भगवान की, क्योंकि इस्लाम के अंदर ऐसा माना जाता है कि मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए. तो काफी जो अरेबिक रूलर थे उन्होंने इस चीज को बंद किया, बहुत से मंदिरों को खंडित किया, डिस्ट्रॉय किया. तो रूप गोस्वामी जी को आदेश था कि मंदिरों को दोबारा से स्थापना करो. और आज भी कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने मंदिर दोबारा से स्टैब्लिश हो. हम ऑब्वियसली राम लला का एग्जाम्पल देखते हैं अयोध्या में, वो भी एक सक्सेस है. और वो एक इंस्ट्रक्शन इन्हीं 4 इंस्ट्रक्शंस में से मानी जा सकती है जो कुछ पॉलिटिशियंस ने या कुछ सेवा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने कोशिश करके पूरा कर पाए. डेटीज की स्थापना करना और उनकी वर्शिप करना, ये हमें अपने घर में भी करना चाहिए. So we should go to the temple, but we should always bring the temple to the home. That's another advice, Avinash Prabhuji, even though you said your friend and even his wife is very spiritual, but to bring Krishna to our family. So the focus is not on each other. The focus and the absorption is towards Krishna. And of course, Krishna, because we are from Hare Krishna movement, but if they go to Gurudwara, then bring Guru Granth Sahib such a way that anything and everything we do in our life, daily basis, it's how. So Srila Prabhupada ji always said that if you want to think, so somebody asked Guru Maharaj ji that how to make the decision if I should do this and that. And he said, if somebody materially will ask, my answer will be, what would your mother think about it? If you can share this with your mother, then most of the time what you're going to do is safe enough and good enough. If you can't share this with your mother, doesn't really matter how old you are. If your mother won't be happy, then highly likely that you cannot or you should not do that thing. But what Guru Maharaj ji said, by spiritually think, will Srila Prabhupada ji be happy with you? If Srila Prabhupada, while you are busy engaged in anything, talking about the devotee or doing the deity worship or preaching, if Srila Prabhupada ji just walks in, what would happen? Will you still be comfortable that whichever service you are engaged in, you are doing to the best capacity? Do you think Srila Prabhupada ji will be happy with your service? The quantity and the quality of it. So if we keep that, but when we have the deity, as I said, personally I can think, so when I'm cutting the fruits for the kids, I could still go very quickly and it might not be that clean. You can just tell kids, oh, well, just take care of it. But when you do it for Krishna, it's a different level. You got to make sure that everything is clean. It automatically comes in that you're cleaning. So when you bring Krishna back in the family, it's not yet you're doing for each other. Together, you're serving Krishna. Together, you are serving Guru Granth Sahib. Will your Guru, and then of course there are 10 Gurus there, well, will your Guru be happy? What they will think about it, if this will happen. And I'm sure this has happened to Guruji's. I've read a bit about
Guru Nanak ji and other gurus as well. A lot happened with there, like what happened with Srila Prabhupada ji. Srila Prabhupada ji के साथ में हुआ, Srila Prabhupada जी की वाइफ को चाय पीनी थी, Srila Prabhupada जी को चाय नहीं पीनी। अब उनके बीच में हमेशा मतभेद होता था। Srila Prabhupada जी कहते थे मेरी वाइफ मेरे को सपोर्ट नहीं करती थी भक्ति के अंदर। And ऐसे बहुत भक्त हैं जिनके साथ में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर्स का, हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए। एंड सपोर्ट करने के लिए अगर हम अपने आप को भक्त बना पाए तो हम उनकी सर्व करेंगे और वो सेवा भाव से एक दिन चेंज हो पाएगी। लेकिन अभी हम उनको चेंज करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो जब हम डेटी वर्शिप करते हैं और जब कोई देखता है कि हम डेटी वर्शिप कर रहे हैं, जैसे कि अभी जब हमने मंगलाचरण करा तो आपने शायद पीछे से आवाज सुनी हो, अनिल प्रभु जी ऑनलाइन थे, बट शिवानी जो हमारी 13 years old डॉटर है वो आ गई। वो कहीं पे थी, घर में कुछ काम कर रही थी, बाकी 2 फैमिली मेंबर घर में ही नहीं थे, लेकिन वो घर में थी। तो उन्होंने सुना कि ओम की आवाज आई तो वो आई, ज्वाइन किया, उनसे कहा नहीं गया। और ये एकदम भी नहीं हुआ, धीरे धीरे 1-2 बार शुरू में कहा होगा उनको कि प्लीज आप क्लास में बैठा करें, मंगलाचरण करा करें, लेकिन धीरे 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 ग्रेजुअली फर्क पड़ता है। सो आई होप वर्शिप, family worship, and writing philosophical and devotional literature to systematically explain the teaching of Chaitanya Mahaprabhu ji. So this is one of those things which Prabhupada ji also did it. Many other, Chaitanya Charan Prabhu ji is doing a lot. कि जो सिद्धांत है, जैसे अविनाश प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात करी कि जो आप बातें कर रहे हैं, कि मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि आप बातें कर रहे हैं थियरी में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दें कि करना क्या है। समझ में तो सब आता है, लेकिन करना क्या है, ये करना क्या है, ये इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि करना क्या है। वाचो वेगम, अनिल प्रभु जी ने कहा, माता जी ने कहा, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर हम वर्ड्स देखेंगे। वर्ड्स के अंदर जो पहला वर्ड है वो यही है, वाचो वेगम। वाचो, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसका वेग, किस स्पीड से, किस क्वालिटी से, किस इंटेंसिटी से हम जो वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहे हैं उसको हमको ऑब्जर्व करना, ये एक इंस्ट्रक्शन है। और फिर इसको कैसे कंट्रोल करना है वो भी है। इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास में, पर करना हर इंडिविजुअल को खुद ही है। शिला प्रभुपाद जी ने कहा मैं भगवान से कैसे जुड़ना है वो बताता हूं, पर जुड़ना आपको खुद ही है। 1-to-1 बेसिस के ऊपर भगवान के साथ हमारा रिलेशन है। बट हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू इट, रूपा गोस्वामी जी explained it very much detail in his books, in his scriptures, which we are going to do in detail. And then the whole purpose, the first 3 instructions, what is the purpose? Why to reestablish the temples, the holy places? Why put the deity and start doing the deity worship? Why write so much about Chaitanya Mahaprabhu ji? Somebody asked Prabhupada ji, you say that we cannot understand Krishna, but you have written so much about Krishna. Why? Prabhupada ji said, just so while try to understand, we take the name of Krishna and we understand that we cannot understand, but still we need to take the name of the Lord, right? And we have seen in our families, classic example which we have been discussing. We don't understand each other in the family, right? In our family, a lot of times misunderstandings happens. Hardly we will find any husband or wife who will say, my wife is ideal, my husband is the best. No, a lot of cases, wives will consider maybe Shah Rukh Khan to be the ideal husband because that's what been portrayed. And this is not a fairy tale. I've met the person very close to me who said, oh, Shah Rukh Khan, only once if I will hug him, only once. I say, what about husband? Husband is there, no problem, right? So my wife is laughing. I think she is also listening. So this happens. It's a real scenario. And I'm just giving the example of Shah Rukh Khan, but I'm sure there will be many more examples of the cricketers, Bollywood, Hollywood. But the idea is the philosophy. Where are we focusing? We both
I say, I come with you. But why Shah Rukh Khan? Why cricketer? Why not Chaitanya Mahaprabhuji? Why not Srila Prabhupada? The whole idea is the whole family should go and meet and we do a lot of retreats there. Let's go as a family to Yatra. Mataji recently come back. Mataji did a lot of yatras, and there is another Prabhuji who organized yatras. So that's how keeping the association. First of all, we do ourselves. We keep ourselves. So re-establishing holy places, deity worship, writing so much. Why? So everyone could practice bhakti yoga. So the last teaching is the main teaching, and the top three where we can focus on the last one. The whole idea is to take the name of the Lord. So these were the four, and Chaitanya Mahaprabhuji gave all the teachings. Rupa Goswamiji accepted them and became the humble servant till end. Till end. Such a beautiful journey to Vrindavan. Of course, many different journeys, and today's Vrindavan, and a lot of I heard, because a great good friend of mine for a long time, he's a beautiful disciple, devotee of Radha Krishna, but Guruji is Kripaluji Maharaj, and such a beautiful soul. I've attended many sessions of his in the past, and when we discuss, then there is hardly any differences. We discuss Radha Krishna, Hare Krishna, right? The terms we might use could be different, but the journey is the same. And he said, when we were discussing about the acharyas, he said Kripaluji Maharaj gave his obeisances to the Shad Goswamijis. Even though the Shad Goswamis are from Gaudiya Vaishnava, and Kripaluji Maharaj might not entirely follow Gaudiya Vaishnava, but pay obeisances to the leaders. Why? Because they are the ones who re-established Vrindavan. Right? So you help in that. And this is the mission everyone follows. And certainly, Rupa Goswamiji didn't just do himself. He gave the credit to other five Shad Goswamis as well. And especially his brother was always there and his nephew was always there, Jiva Goswamiji. These three, they were together most of the time. And Govindaji temple is still very famous. Govindaji temple, if you go, have a last time I visited last couple of times, it's very Govindaji temple is the one I think which is close to Rangji Mandir. So fortunate enough, I used to one of my close relative stays in the temple, and I have stayed in the temple in Rangji Mandir. Rangji Mandir is just opposite in this massive kind of South Indian temple. Because South Indian, the committee is South Indian, the prayers are South Indian. But Govindaji temple, I think, is the front one, and we have visited a lot of times there. But a lot more could be done there, I think. But the establishment was by Rupa Goswamiji. Rupa Goswamiji and Sanatan Goswamiji, who put together Madan Mohan temple, which is next to Bihariji. Especially the new route open to Bihariji. That's where the temple is, Madan Mohan. So now the contribution and the legacy. So the contribution, what he did, legacy, what he has left for others. Now, great word, English language, Saminya. The word is that this is the foundation. Based on this, a lot of other work being done. So we discussed last time that Ved Vyasji wrote the most of the Vedic literature, but after him, Jiva Goswamiji is the next one. And Jiva Goswamiji is the disciple of Rupa Goswamiji, disciple and nephew of Rupa Goswamiji. All his work, he said, is based on Rupa Goswamiji. So Rupa Goswamiji put nectar of devotion and he elaborated further in his teachings. But he said the essence is my gurus. If you understand my guru, you don't have to read me. That's what Jiva Goswamiji very humbly said it, and he was. So I consider Chaitanya Charan Prabhuji is one of those in these days. If you have heard Chaitanya Charan Prabhuji, very intellectual. Jiva Goswamiji was the same. Rupa Goswamiji
is considered as a rasa, and we will discuss that. Rupa Goswami ji had such a ras, and Bhakti Rasamrita Sindhu, if we say, it's it's hard for somebody like myself to even completely appreciate it, because I can't even understand. It's the mood you need to get in. It's like somebody's at the front of deity and will start crying. Another person is looking at the deity and looking at this person and thinking the person is mad. So it's hard for us what devotees feel, even just the presence of the deity. But this is what Rupa Goswami ji has given to us. This is the foundation what we can do on top of it. A lot of work, and very systematically. And we will see the work. A lot of them are poetry, and Bhagavad Gita, Geet, the poem of the Lord. Similarly, a lot beautifully in Bengali, in Sanskrit, and a very practical guide. So Avinash Prabhuji was asking for practical aspects. Very, very practically, the acharyas have written about it. So 20 authentic texts. So because it's been like 16th century, 21st century, so 5-6 centuries gone past. Chaitanya Mahaprabhu has been 500, over 500 years. So until now, a lot of work been lost, but at least 20 authentic texts we have. And what we can see, foundation text of Gaudiya Vaishnav is, so Nectar of Instruction we will see, but the Bhakti Rasamrit Sindhu. So I'm saying nectar of devotion, but because it's Sindhu, which is the ocean of nectar of devotion. So this is about another scripture we will see. Beautiful. This was the most influential work. Based on this, a lot of places we will see the reference to this classification of devotional rasas. Srila Prabhupada ji mentioned it a number of times. Many great preachers now share it. But Rupa Goswami ji was the one who categorized it for us, who provided these categories for our own understanding so we can understand it better. And we will see. Hare Krishna. So we are at the end of it. And I see Anil Prabhuji is unmuted. So I'm wondering if Prabhuji would like to add something to it. No, Prabhuji, just a quick confirmation. Please. So these rasas that we are talking about are these same rasas like the Vatsalya ras and the okay. Yes, Prabhuji, you're right. Shanta Rasa, and we will see. I think I've put that in this slide as well. You're right, Prabhuji. Yes. Okay. Thank you, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. We discussed them very briefly in Goloka chart also, that there are different types of rasas. So, and we all have those kind of rasas. The way I will meet my mother, my wife, my daughter, I'm the same person. I will hug physically same, but the emotions, the rasas are different. And in devotion, we have rasas, and those rasas were given by Rupa Goswami. It's a classification, and that's the significance of his work. 9 stages of devotional services. Of course, in Bhagavatam, we see the Dhruv Maharaj, and then Prahlad Maharaj gave the Navvidya Bhakti. But we will see on top of it, in Bhakti Rasamrit Sindhu, how much elaborate work Rupa Goswami ji has given. Ujjwal Neelamani is a work, another Shastra, and as the English word, blazing sapphire. It's the Ujjwal Neelamani. The name itself in Sanskrit, if you hear, imagine when he gave that name, what he would have thought. And when the devotees, I think it was Shiva Nanda Swamiji Maharaj from Hungary, who said that it's like I got goosebumps when I read this book, that scripture. I got the goosebumps. How clearly the instructions being given and explained. So a lot of, again, divine love, which is hard for us to understand because we are very polluted, especially when it comes to love. Krishna Radha relationship philosophy, very hard to understand because we only have man and woman. How to understand the transcendental work? Then Laghu Bhagavatam. That's another beautiful. So Bhagavatam is 18,000 verses. Laghu Bhagavatam, Laghu itself is a small. So Sukshma,
Lagu Bhagavatam in a very small, concise way, Rupa Goswami has given, and there's a great study on that also. Comparative studies of Krishna forms and associates. Our Gaurang Darshan Prabhuji, who is the author of Subodhini, he does this amazingly. So in the recent, the devotees, whoever, like many devotees who have given a lot of commentaries, but the work which Gaurang Darshan Prabhuji has given, comparing the studies and summarizing the studies and presenting it in a very workflow, in a chart form. So if you don't know what I meant, if you just type Gaurang Darshan Prabhuji's Subodhini, he has given Subodhini. Subodhini is, he has explained what Subodhini is, and if I try briefly, it's just concisely explaining something in very concise and practical way. That's a Subodhini in very loose translation. But Gaurang Darshan Prabhuji, if you like to search him, great scholar and very young. And I think, was it Radhesham Prabhuji? I think Radhesham Prabhuji has a podcast with Gaurang Darshan Prabhuji, where Gaurang Darshan Prabhuji said to Radhesham Prabhuji that you inspire us. And Radhesham Prabhuji said that if I inspire you, it's because of course, Srila Prabhupada ji and the work they have given. But you and the youngsters like you give me the reassurance that when I am gone, my work, Srila Prabhupada's movement, Chaitanya Mahaprabhuji's Holy Naam, will continue forever as long as we have the youngsters like you. And then he said, thank you for giving the Subodhini to devotee population. And I think it's a great high note to end today's session. So thank you so much. We will continue. Maybe we will have another session to finish off Rupa Goswamiji's, and then we will start his great work, one of his great works, Nectar of Instruction, which is very concise. And then we will move on to Nectar of Devotion, which is great, immense ocean. So thank you everyone for being here and contributing and giving me the opportunity to serve. Look forward to see you next Saturday, and we'll get into more depth of devotional service. With that, Gurudev Maharaj ki jai, Jai. Radhe ki jai. Jai Jai. Shri Guru, Jai Shyam. Hare Krishna. Hare Dandavat Krishna. pranam. Hare Krishna, Prabhuji, Hare Krishna. Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna. So I will end